Hello dear student, welcome back to Osis by Ranjan. आज हम डिस्कशन करबा 2023 सीपीटी क्वेश्चन आंसर जो माने पर्यंत हमर टेस्ट सीरीज जॉइन करिनो डिस्क्रिप्शन में थिबा लिंक को जाई के जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज गुडा को जॉइन कर दियो जोटा कि तुमरो अपकमिंग एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट रहबो. ओके, लेट्स कम टू टॉपिक. With what concept does economics deal primarily with? देखो से फास्ट क्वेश्चन कौन पचार ना इकोनॉमिक्स रे हमें फास्ट को जिनस गुड़ाक सहित डील करूँ. इकोनॉमिक्स रे जानिच in economics we fulfill our unlimited wants with limited resources. तो limited resources सहित हमें डील कर जोटा कि स्कार्सिटी रिसोर्सेस रो अभाव थाए ता सहित ही आम डील करके आमर वांट्स गुड़ाक फुलफिल करती. तो इकोनॉमिक रे फास्ट आम डील करती क्या सहित स्कार्सिटी सहित. तो यार आंसर हम ए. What concept is illustrated by the saying there is no free lunch? देखो there is no free lunch माने कौन ना कौन सी भी जिनस जदि आम गोटे जिनस को चूज कर तार किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छी जोटा को आम छाड़ा पड़ुची. ओके, टू चूजिंग वन कमोडिटी बाय सैक्रिफाइस द अदर्स जो किसी जिनस चूज करने किसी जिनस छाड़ा पड़े सीटा कह जाए देयर इज नो फ्री लंच. आ यहाँ को केस रे पॉसिबल हुए ना ट्रेड ऑफ रे पॉसिबल हुए. है तो यार ऑप्शन हूँ सी आंसर. Rahul spending an hour of studying instead of playing tennis. What is the opportunity cost of to him of studying? देखो से कौन कही राहुल गोटे घंटा पाठ पढ़ला टेनिस खेलिबार टाइम टाको छाड़ी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहले कौन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट बा जो कामटा आम करूँगी तापाई जो कामटा छाड़ुंट तार कॉस्ट. तो ये राहुल टेनिस खेलिबार जो गोटे घंटा खेली था फिजिकल एक्सरसाइज ही था से गुड़ाक तार लॉस जोटा कि तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ऑप्शन में देखो कोटा अच्छी इम्प्रूवमेंट इज ग्रेड इन फॉर स्टडिंग इटा नुह. ऑप्शन सीटा देखो द एंजॉयमेंट एंड एक्सरसाइज ही वुड हैव रिसीव्ड ही प्ले द टेनिस. तो ये आंसर हम सी. चारि नंबर क्वेश्चन देखो फॉर व्हाट रीजन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटाइली यूजुअली कनकेव टू द ओरिजिन. प्रथम बुझ कि पीपीएफ कौन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटाइल कहले कौन. पीपीएफ आर द टिपिकल कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. है युड़ाक बेसिकाली था कनकेव टू द ओरिजिन कौन पाई ना increasing opportunity cost. As more of one good producing, the opportunity cost of producing additional unit increases. Okay, the PPF shows the graphical representation of the various combination of two goods and services. Okay, the PPF कौन शो करे ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज जोटा कि शो करे. तो ये कौन करे ना गोटे जिनस चूज करने आ गोटे जिन छाड़ा पड़े जोटा कि तार इनक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. तो यार आंसर हूँ बी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन फॉर टू गुड इंडिफरेंस कर्व रे कोटा प्रॉपर्टी नो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन जोटा कि तार फास्ट प्रॉपर्टी. इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. हाँ ओके, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन. देखो यहाँ कनकेव अच्छी ना कन्वेक्स अच्छी तो यहाँ कौन अच्छी कन्वेक्स अच्छी. तो यहाँ तार प्रॉपर्टी नुह. एन इंडिफरेंस मैप इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिफरेंस मैप रे कौन शो करे ग्राफटा देखी दियो मनकर एगुड़ा सब आईसी ए कौन शो कर शो कर कंज्यूमर प्रिफरेन्स केते
इफ तार इनकम राइज करुच्ची ताहले सी कौन कंज्यूम करुच्ची बा तार कंजम्पशन कैपेसिटी कौन तार प्रेफरेंस कौन से ऊपर ही नॉलेज दूची है प्राइस ऑफ द गुड ना मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर नुह बा टोटल यूटिलिटी ऑफ टू गुड नुह से कहूँ कंज्यूमर प्रेफरेंस कौन आंसर हम ए in a if a farm sell his output on a market that characterized by many seller buyer homogeneous product unlimited long run resources mobility and a perfect knowledge then the farm is an এটা କ'ଣ perfect competitor farm ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲର ଥିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିବ ସେଲ୍ସ ଚାଲିଥିବ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଲେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନର character. A perfect competitive farm should reduce output or shut down if the short run market price is equal to marginal cost and the price is देखो से पचार परफेक्ट कम्पिटेटिव फार्म रे गोटे फार्म केतेबेले शट डाउन करिवो केतेबेले करिवो ना जेतेबेले शॉर्ट रन रे कोन हेते ना फिक्स्ड कॉस्ट आउ वेरिएबल कॉस्ट थाए जे पर्यंत फार्म तार वेरिएबल कॉस्ट को कवर करूची से पर्यंत से फार्मटी प्रोडक्शन कंटिन्यू करिवो जदि तार फिक्स्ड कॉस्ट कवर न होउची देन तथापि भी से कंटिन्यू करिवो बट जेतेबेले तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा वेरिएबल कॉस्ट थारु sorry price of the goods is less than the variable cost then that farm will be shut down okay it the option देछि less than the average variable cost जदि variable cost थारु तार प्राइस टा कमी जाउची देन से आ फार्म आकु कंटिन्यू न करी शट डाउन करिवो a farm's demand for labor is known as derived demand because dash देखो derived demand कहले कोन सपोज गोटे प्रोडक्शन फंक्शन चलची गोटे फार्म रे प्रोडक्शन चलची तार लेबर डिमांड केते बड़ होबो जेते बळे से प्रोडक्शन बढ़ेइबो ओके एटा नॉर्मल डिमांड डिराइव डिमांड कहले कोन जेते बळे सेही कंपनी रो प्रोडक्ट ता मार्केट रे अधिका सेल होबो आ सेही टाइम रे सेटा को प्रोडक्शन करे पई लेबर अधिका दरकार पड़िबे सेटा को सेही जो लेबर रिक्वायरमेंट ता कोती डिराइव डिमांड जेते बळे तार डिमांड ता डिपेंड करिवो तार सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओके जेहेतु से प्रोडक्ट से सीजन रे अधिका सेल होची सेही टाइम रे लेबर अधिका एग्रीकल्चर जेमति रे जाओ जो टाइम रे प्रोडक्शन अधिका होची सेही टाइम रे एग्रीकल्चर लेबर रो डिमांड अधिका थाए प्रोडक्शन प्रोसेस सरी गला परे आ लेबर रो आवश्यकता न थाए तो एही टाइप रे जो डिमांड ता डिपेंड करे तार सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट बा तार प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सेटा को जे डिराइव डिमांड इधर देखो ऑप्शन बी देछि इट्स डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट्स सेल इन द मार्केट तो यार आंसर होबो बी the change in consumption that result when the price changes move the consumer along with different given indifference curve is called dash देखो इधर कौन देछि the change in consumption when the result price change move consumer along a given indifference curve माने करो एटा तमरो indifference curve तमे एई लेवल रे कंजम्पशन करूछो कोनोसी प्राइस चेंज हेतु जदि तमरो एई लेवलटा एई लेवल को पळे आसिला ताले से पचारिछि एइठी जो पळे आसिला इंडिफरेंस कर्व एइटा कोन कह जाय को इफेक्ट जुक आसिला गोटे रो प्राइस कमिले सपोज इटी टी आ कॉफी रो एग्जांपल नै जाओ टी कॉफी रो प्राइस कमिले सॉरी बढ़िले चार डिमांड बढ़े तो यहाँ गोटे आउ गोटे कौन कर सब्स्टिट्यूट करुच्ची तो इफेक्ट कौन कह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ डैश देखो ओपेक कंट्री कौन करे ना यहाँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारा तेल बिक्री करथिबा कंट्री बा फार्म गुड़ाक एकाठी मिसिकी तार प्रोडक्शन तार सेल्स ये सब गुड़ाक डिस्कसन करती आ प्राइस फिक्स करती आ जो फार्मटा हो जाए सेटा कह जाए कार्टेल ओके तो कार्टेल कहले कौन ए कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ फार्म दैट इंक्लूड
to restrict output increases बेसिकली कार्टेल कहले गोटे ग्रुप ऑफ फार्म बा किछि फार्म मिसिके एकाठी डिस्कशन करती कि प्राइस केते रखिबा प्रोडक्शन केते करिबा और सेल्स केते करिबा बुझिला एटा गोटे कार्टेल कह जाए जो कि अपेक्षार गोटे एग्जांपल तो आंसर हम सी The locus or joining the point of tangency between isoquant and isocost line is also known as a dash. से कौन कही ना आइसोकोस्ट आउ आइसोक्वांट ये दुईटा जाक जदि जो जो पॉइंट टच कर कौन कह जाए सेटा कह जाए तुम एक्सपांशन पाथ बुझीगला कौन पे कह जाए इट रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विथ गिवन टेक्नोलॉजी जी टेक्नोलॉजी बा आइडिया बा जी लेबर अच्छी से इस्तेमाल करिकी बा व्यवहार करिकी मैक्सिमम प्रोडक्शन जोटा करती सीटा आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट रो जॉइनिंग पॉइंट गुड़ा downward sloping convex isoquant implies that a substitutely between the factor of production is dash देखो आइसोक्वांट्स लाइन गुड़ा क्यों पड़ी थाए बुझी एठी जदि गोटे कहूँ कि कन्वेक्स अच्छी ताने से कौन कहूँ कि गोटे आ गोटे को इम्परफेक्टली भाव में सब्स्टिट्यूट करुच्ची बुझी the downward sloping convex isoquant implies that the factor of production is imperfect because imperfect substitute between factors of production implies that the isoquant are convex to the origin. The elasticity of substitution of a coprogonal production function is dash देखो coprogonal production function टा कौन थिला q is equal to a plus l into alpha plus k into beta ये थिला जो कि alpha into beta is equal to 1 एटा थिला जार मीनिंग थिला कि 1% चेंज इन alpha leads to 1% change in beta बुझी तो यार वैल्यू होची केते 1 if 2% zero sum game means देखो 2% zero sum game कहले जनकर गेन बा प्रॉफिट आउ जनकर लॉस होइथिबो गोटे लोक जहाँ गेन करटा आउ कहार गोटे लॉस होइथिबो एई भलिया केस रे कहती 2% zero sum game तो सम of losses of one player is equal to the sum of gain of other जोटा कि ऑप्शन ए रे दे दीची the size of the payoff matrix of a game can reduce by using the principle of a dash देखो इतरे कौन थाए ना मन करो एटा गोटे मैट्रिक्स दे दीची आ गोटे एटा मैट्रिक्स सॉरी एई भलिया गोटे मैट्रिक्स दे दीची इतरु कौन करंती हमें ना एइतर गोटे को एलिमिनेट कर दियंती एइतर गोटे को एलिमिनेट कर दियंती तापर एटा कोन 2/2 मैट्रिक्स रहला तो एई भलिया मेथड रे हम कोन करंती गोटे बदल रे आ गोटे को एलिमिनेट करती बुझीगला ये जो मैट्रिक्स टा करती एटा कौन कहती एलिमिनेशन मेथड ऑफ द मैट्रिक्स सॉरी एलिमिनेशन एटा केमिति एलिमिनेट करती ना जो लाइन टा डोमिनेट करे सेटा को छाड़ी बाकी गुड़ा करती तो एटा कहते कौन डोमिनेशन मेथड बा एलिमिनेट करती आम ये नॉर्मली
डोमिनेशन रो एंड कॉलम आर एलिमिनेटेड टू अदर रो एंड कॉलम जोटा डोमिनेट कर रहा बाकी गुड़ा कटिज ये डोमिनेंस ये कले सी जोटा बड़ थाए से व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल देख स्टॉक वेरिएबल कहले कौन ना जोटा कंसिस्टेंसी भाव में हाँ स्टॉक वेरिएबल कहले कौन ना जोटा रही जाउथबो स्टॉक एक्सपेंडिचर तुमर कंटिन्यूअसली बढ़िबो कमिबो सैलरी भी बढ़िबो कमिबो सेविंग भी डिपेंड करे सैलरी ऊपर किंतु वेल्थ कहले कौन तुमर जति एसेट्स रहिला प्रॉपर्टी रहिला से गुडा जोटा कि गोटे स्टॉक कांसेप्ट GDP at a market price exceeds GDP at a factor cost by amounting revenue rise with through dash देखो मार्केट प्राइस आउ हाँ GDP at a market price exceeds the factor cost by the amount of a revenue raised through indirect tax देखो GDP at a market price factor cost असले कौन हुए indirect tax टा ऐड हुए cotton yarns purchased by textile mill as a intermediate good cotton रो से जो तुड़ा बंडल गुड़ा जो किणती से कौन आज रो मटेरियल हिसाब से किणती रो मटेरियल हिसाब से किणती से कौन हम इंटरमीडिएट गुड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द नेशनल इनकम देखो नेशनल इनकम रे कौन कौन ऐड हुए इंटरमीडिएट गुड ऐड हुए वैल्यू एडेड मेथड रे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी ऐड हुए विंडफॉल गेन भी ऐड हुए हाउस होल्ड सर्विस रेंटेड बाय द हाउस वाइफ्स इटा भी ऐड हुए एग्रीकल्चर लेबर टा तुम ऐड हुए नहीं तो यार आंसर देखो कोटा हम 1 2 3 आ 5 जो अच्छे ऑप्शन सी है which of the following gives the relationship between tax rate and amount of tax revenue देखो एटा तुमर कौन टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू मध्य रिलेशनटा कौन थाए एटा आंसर हम लाफेर कर्व ये तुम कौन सह करे ना रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू इफ टैक्स रेट इज इंक्रीज देन टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीज but after a certain period of time tax rate will be increased but tax revenue is decrease so the curve is a bell shaped curve है that have Laffer curve which of the following equation is not true it is not true APC is average propensity to consume is plus average propensity to save is equal to 1 এটা ঠিক আছে এটার এটা এর যাহা আছে বিটা भी सेम ଅଛି बास टिके एपट सेपट कर देछि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एटा भी ठीक अछि बस APC और MPC इज इक्वल टू 1 एटा ठीक नुह तो 22 नंबर हम डी in which type of economy domestic income is equal to national income domestic income is equal to national income income केते बळ हबो ना क्लोज इकोनॉमी रे हबो काना एतरे फॉरेन रो कोनोसी संपर्क नाही केवल निज टेरिटरी भितर कंप्लीट थाए है which one of the following group will not be negatively affected in price rise देखो प्राइस चेंज हेले कहा कहार कौन इफेक्ट हबो फास्ट देख तो कंज्यूमर कौन हम जब प्राइस बढ़ला तार कंजम्पशन पावर कमी जो तो ये नेगेटिवली अफेक्टेड है पेंशन मानकर कौन ना ताकर परचेसिंग पावरटा कमिज तो सी भी नेगेटिवली बिजनेस क्लास कौन हम ना जब प्राइस बढ़ीगला ताहले लोक मैंने डिमांड कम करेंगे तो ताकर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ो बट डिबेटर कौन हम तार पॉजिटिवली अफेक्ट पड़ो है कहीं जब प्राइस राइज करुच्ची ताहले डिबेटर मानकर से कम परचेसिंग पावर से देथिबे आ मैक्सिमम परचेसिंग रे गेन करेंगे कहीं इंटरेस्ट सहित तो तांकर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ो तापर क्वेश्चन देखा assume that consumption function
is of the form C is equal to 50 plus 0.8y. If the income is 1000 then consumption shall be dash. Y ଜାଗାରେ 1000 पुट कर दियो केते हबो 850 सॉल्व कर दिया है C is equal to 50 plus 0.8 into 1000 ये गला 800 plus 50 is equal to 850 ये सॉल्यूशन टा ठीक अछि हला आंसर हबो 850 an increasing in marginal propensity to consume will be dash increasing marginal propensity to consume कहले कौन ना गोटे लोकर कंजप्शन पावरटा बढ़ी जीवो आ जे तार कंजप्शन पावर बढ़ी गला सेते बेले कौन हबो ना से जेतिक इनकम करूची तार कंजप्शन ताठू अधिका करिवो गोटे ऑटोनोमस कंजप्शन ता सहित सब बेले ऐड हेकी थिवो सो तार ग्राफटा स्टीपर हे जीवो हैला an outward shift in MEC curve would dash marginal efficiency of capital टा जदि outward move करछि ता माने कोन हला देखो MEC माने कोन marginal efficiency of capital जोटा कि इंडिकेट करूछि कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट केते होबो बुझिला आ जदि एटा आउटवर्ड शिफ्ट करूछि ता माने एग्रीगेट डिमांड टा इंक्रीज करूछि हला एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करूछि माने तमरो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन अधिका सेल अधिका हो जे तो प्रॉफिट अधिका माने MEC इनडायरेक्टली तो MEC आउटवर्ड शिफ्ट माने तमरो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करूछि which of the following might shift in Saturn Philip curve to the left देखो फिलिप्स कर्व टा फास्ट शो कौन करे फिलिप्स कर्व शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ओके जदि एटा तमरो लेफ्ट को शिफ्ट करूची दैट मीन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेक्शन लीड द एक्चुअल इन्फ्लेक्शन शिफ्टेड कर्व टू द लेफ्ट तमरो एक्चुअल इन्फ्लेक्शन टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेक्शन सहित लीड करथो सेते बेले जाई के एटा हबो आ सेटा केते बेले हबो ना जेते बेले मैक्सिमम लेबर फोर्स रो सॉरी डबल कहते मैक्सिमम लेबर फोर्स होबनी द राइज ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन एटा हबो बुझो which of the following might shift the Saturn Philip curve should left सेते बेले हबो जेते बेले तमर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेक्शन रेट टा लीड करिवो एक्चुअल टू a situation where people who have taken out insurance behave more riskless as a result known as a moral hazard it have a moral hazard is a situation where the people are taking more insurance behave like riskless माने riskless है कि से माने कंजप्शन करंती बा इंश्योरेंस गुडा को कंज्यूम करंती हैला sometimes they bear the full cost of the insurance and sometimes they gain the maximum profit तो एटा होची moral hazard हैला तापर देछि in the Mundell Fleming framework in small open economy under the fixed exchange rate इतरे कोन होय मुंडल फ्लेमिंग मतलब स्मॉल इकोनॉमी कहले इतरे गवर्नमेंट इंटरवेंशन थिबो ही थिबो आ जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थिबो सेठी कोन होय ना तमरो मॉनेटरी पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रुहे as compared to the fiscal policy टा अधिका इफेक्टिव रुहे मॉनेटरी पॉलिसी थारो सेटा होजे स्मॉल क्लोज इकोनॉमी रे हेताय ओपन इकोनॉमी रे मॉनेटरी पॉलिसी अधिका काम करे तो 30 नंबर टा हबो बी Which of the following statement is about the rational expectation is not correct? Okay, এটা কোন গেছি না rational expectation টা satisfy করনথো এটা assume that people take account for all information এটা হচ্ছে rational expectation they assume that no average people forecast the correct এটা भी
ତମର rational expectation ଗୋଟେ they implies that expected change in demand have no effect on unemployment or price level ଏଇଟା ବି ସେଥିରେ ଯାଉଛି rational behavior କହିଲେ କ'ଣ ସେ ସିଚୁଏସନଟା ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ ଥିବ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବ ଭଲସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ରେସନାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଟ୍ 4 ଦେଖ they implies that unexpected changes in demand have long lasting effect both employment and price level ଏଇଟା ହେଉଛି irrational decision କାହିଁକିନା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ସେଇଟା ରେସନାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ଯାଉନି as economic development proceeds income inequality tends to follow the curve is called a dash इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेसटा सबुबले इनवर्टेड यू शेप्रे थाए कहीं थाए ना डेवलपमेंट प्रोसेस इनिशियली इनइक्वालिटी इंक्रीजेस है फास्ट से कौन करे ना इंक्रीज करे तापरे डाउन करे आ पुणी थे इंक्रीज करे गोटे यू शेप रुए आ फास्ट देख इंक्रीज कर कौन भी डेवलपमेंट कलापर गोटे पॉइंट ऑफ टाइम पर सीटा पिक को पलैब आपर से पुणी डाउनफॉल कर जोटा कि इनवर्टेड यू शेप रही तापर देछि कैपिटल डिपनिंग मीनिंग कहले कौन ना गोटे न्यू कैपिटल ऐड करागला कौन भी एक प्रोडक्शन फंक्शन ने जदि गोटे नुआ टेक्नोलोजी गोटे नुआ मेसीनरी आसला ताकू यूज करने जो नुआ लेबर नीड करती से कह जाए कैपिटल डिपनिंग बुझे बा नुआ टेक्नोलोजी जहाँ आसले से जोड़ा कहते कैपिटल डिपनिंग तो यहाँ हम कौन द राइज ऑफ इन द रेशियो ऑफ कैपिटल लेबर सी 34 statement 1 कहते there is a positive relationship between ranking the Indian state according to human development index HDI टा तमरा पॉजिटिव रिलेशन रखुचे स्टेट गुड़ाक हाँ स्टेट गुड़ाक रैंकिंग क्या द्वारा करा जाउची HDI द्वारा आउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा तो यहाँ ठीक अच्छे the true underlying the dimension of SDG targeting the closely related to एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम हाँ तुम सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट कहले एजुकेशन आउ हेल्थ रिसोर्सेस को बुझे तो दीटा स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे है तो ऑप्शन एटा हम ठीक आंसर if the Gini coefficient taken value is equal to 1 it indicate the maximum inequality है गिनी कोएफिशिएंट तुम कौन शो करे इनइक्वालिटी तो जदि 1 देखो ताले मैक्सिमम 0 देखेले मिनिमम सिंपल who according to J. Schumpeter are the creative forces by derive economic growth Schumpeter का मतरे इकोनॉमिक ग्रोथ पाई कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण यहाँ देख सुम्पिटर सब कौन कहते बिजनेस आउ एंटरप्रेन्योरशिप उपरे डिपेंड करते एंटरप्रेन्योरशिप माने कौन ना कौन सी गोटे नुआ आइडिया इन्वेंट करिवो बा कौन से एक प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन को बाहर करिवो जोटा कि मार्केट रे सेल करके इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप कर पारिबो बुझला तो सुम्पिटर सब एंटरप्रेन्योरशिप कहला एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ही ग्रोथ कर पारिबो बोले कहते तापर कौन दीजिए नंबर रिटेन इन जर्सी ऑफ ए प्लेयर एज एन एग्जांपल ऑफ हाँ यहाँ हम नॉमिनल वेरिएबल कहीं ना ये जो नंबर गुड़ाक यार कौन भी रिसर्च प्रपोजल न थाए एगुड़ाक कौन सी मेथड रे बा रैंडम सैम्पलिंग मेथड रे न थाए इज जस्ट ए नंबर टू आइडेंटिफाई द प्लेयर सो इट्स ए नॉमिनल नंबर बा नॉमिनल वेरिएबल
data related to human being is called the option देखो territorial data, peripheral data, organizational data, demographic data. तो ह्यूमन बींग्स उपरे रिलेटेड डाटा कहले ताकर बार्थ रेट, डेथ रेट, इनफांट मोर्टालिटी रेट, सॉरी को एज ग्रुप रो केते लोक अछंती एई डाटा को जेते एनालिसिस करा जाय सेला कहा जाय डेमोग्राफिक डाटा. The choice of a resource design determined by the resource रो डिजाइन टा कहा ऊपर डिपेंड करे. देखो रिसर्च रो डिजाइन टा सब बेले डिपेंड करे तार नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. आम जो रिसर्चटा कर तार कौन प्रोब्लेम थाए कि आम रिसर्च रो प्रॉब्लम कौन आम किभली सॉल्यूशन कर बेस्ट आइडिया दे पारिबा. तो यहाँ सब डिपेंड करे कहार रिसर्च प्रॉब्लम ऊपर. ऑप्शन ए ही ठीक आंसर हम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा कलेक्शन मेथड. डाटा कलेक्शन मेथड कोटा नुह रिसर्च क्वेश्चंस यार आंसर हम रिसर्च क्वेश्चन. कहीं रिसर्च क्वेश्चन गुड़ाक द्वारा आम डाटा कलेक्शन करती बट डाटा कलेक्शन कर गोटे मेथड नुह. इंटरव्यू द्वारा डाटा कलेक्शन करती, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन एगुड़ाक सब गोटे गोटे मेथड. बट रिसर्च क्वेश्चन द्वारा आम करती मेथड नुह. A text taken from sources placed in a research report without reference. What is it is called? आम कहते कि गोटे सोर्सेस डाटा को आम नहीं आम रिसर्च रे यूज करवा बट तांको क्रेडिट दबानी से प्लागारिज्म कहते. एटा लास्ट 2022 क्वेश्चन डिस्कशन कला बेले भी कही. स्टेटमेंट 1. Code of ethics are formulated to regulate the relation of the researcher with the people and field which they intend to study, which is the right statement. All the risk involved the study need not to be explained to the participant in advance. एटा तमरो ठीक नुह हैला. जहाँ रिस्क अच्छी बा जहाँ प्रॉब्लम अच्छी से गुड़ा पार्टिसिपेंट सहित आगुआ डिस्कशन करवा कथा. तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट अच्छे बट 2टा ठीक नहीं. तो स्टेटमेंट आंसर हम बी. ओके सीधी 43 नंबर कौन दीजिए. Which one is not one of the principal cause that led to decay in handcraft in India during the colonial period? colonial period रे कौन पाई हैंडक्राफ्ट गुड़ाक सेल हो पार नथिला. जिते colonial period चलता से जो हैंडक्राफ्ट जो मैंने बनाऊले पाखे पैसार अभाव था. लैक ऑफ अवेलेबल ऑफ क्रेडिट. ऑप्शन सी क्रेडिट अभाव था जो कारण कि सेटा प्रमोट हो पार ना तार ये हो पार ना. The number of people in different age group in a population is referred to as age composition. Yes, that was age composition. Which ministry responsible for the calculating GDP in India? GDP तुम किए कैलकुलेट करे ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये मिनिस्ट्री तुम करती. Which 5-year plan give the slogan of गरीब हटाओ. यहाँ तुम 5th 5-year plan रे स्लोगान थिला गरीब हटाओ. 1974 रु 1979 पर्यंत चलता. यार मोटो ही थिला गरीब हटाओ. The first 5-year plan of India was based on the एटा हबो फर्स्ट 5-year plan टा कहा ऊपर थिला ना
rapid industrialization and a focus on the agricultural development in the country. এটা କାହାର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା? এটা ଥିଲା ମହାନଲବିସର ମଡେଲଟା। In the context of Indian agriculture, which one of the following statement is correct? କୋଉଟା correct ଥିଲା? White revolution in the field of agriculture associated with the modernization of sheep farming, এটা ନୁହଁ, এটা ଭୁଲ ଅଛି। Blue revolution in the field of agriculture associated with the improvement in the production of the fish and marine product, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତମର ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବା ମେରିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। Who announced the launch of ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଟା ହେଉଛି ମନମୋହନ ସିଂ ହିଁ କହିଥିଲେ ହେଲା। When was the first event industrial policy revolution announced in India? ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1948ରେ, ତାପରେ 1956ରେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ 1956ଟା ସେକେଣ୍ଡ। A plan for economic development in India was issued by a group of leading industrialists in India which is popularly known as, এটা ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ତମର ଟାଟା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମିଶିକି ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା 1994ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍ କୁହାଯାଏ। The first major environmental protect act promoting in India was, କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟ ଥିଲା। ତ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। As per the Odisha Economy Survey 2022 and 23, the rate of growth Odisha economy was a dash that of the Indian economy during 2021 and 22. ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ଥିଲା ବା ଫାଷ୍ଟର ଥିଲା। Odisha Millet Mission, one of the flagship program of the government of Odisha, was launched in dash। ଦେଖ ଏଇଟା 2017-18ରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା କେବଳ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଲା, to promote the millet cultivation and output. Who recommend the minimum support price of agriculture commodity? এটা ତମର MSPଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି ତମର କମିଶନ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଫିସରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। Which one of the following is not a function of a central bank of a country? central bankର ଫଙ୍କସନ୍ କୋଉଟା ନୁହଁ? ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦି ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ମନି, ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଅଛି। It lends money, accepts deposit from the public, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ସେଭ୍ କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ, ବୁଝିଲା। ପବ୍ଲିକର ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ପେପର ମନି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦି ଫେଟ୍ ମନି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ଫେଟ୍ ମନି କହିଲେ କ'ଣ? ଫେଟ୍ ମନି ଇଜ୍ ଏ ମନି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ଦି government or issued by the government for the specific purpose, not used as a physical property accept. Okay, the paper money is called the fiat money because it is issued with the authority of government ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଯେମିତି ସିଲଭର କଏନ୍ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କଏନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଫିଟ୍ ମନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ, ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପେପର ନୋଟ୍ଟା, ବଟ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 100 ଟଙ୍କା କି ନୁହଁ। ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି।
while constructing an index, the base year is also taken as a 100 ହେଲା ତମର ବେସଟା ସବୁବେଳେ 100 ରୁ ନେଇକି ହିଁ କରାଯାଏ। which one of the following is a public good ସେ ଦେଇଛି ଏଥିରୁ କୋଉଟା public good the tree in your garden ସେଟା ତ private property ହେଇଗଲା railwayଟା governmentର ବଟ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସୋ ଏଟା ବି ତମର ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ ହବନି ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ହେଲା ଯେମିତିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବଟ୍ ୟାର ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ହାୟର ଇଜ୍ ଦ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦ କନଜ୍ୟୁମର ଏଟା ଲେସର ହବ କାହିଁକି ଶୁଣ ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କନଜମ୍ପସନ୍ ଏମିତି ବି କମି ଯାଉଥିବ କାହିଁକିନା ତାର ଟିକେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ ବୁଝିଲା ଆଉ ଏଠି ଯଦି ତମର ବର୍ଡନଟା ହାଇ କରିଦେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡନଟା ହାଇ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ତାର କନଜମ୍ପସନ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡନଟା କମ୍ ଥାଏ। Which of the following is not a part of a human development index? Human development index रो कोटा गोटे पार्ट नुह यार आंसर होची infant mortality क्या infant mortality तमरो PQLI physical quantity of life index टा मपा जाए HDI नुह। Which one of the following is not an assumption of a theory of absolute and a comparative cost advantage? Absolute cost advantage theoryଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଆଉ ଡେଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ୟା ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଚାଲିବ ଲେବର କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ହିଁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱେ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ বা তার ବି ମୋବିଲିଟି ଥିବ ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ତ ଏର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟଟା ଜିରୋ ହେବ ଏଇଟା ତାର ଆଜମ୍ପସନ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଆନାଦର ଇନଭଲ୍ଭ ଦି କଷ୍ଟ ଏଠି କଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବଟ୍ ଏଠି ତାର ଆଜମ୍ପସନ୍ରେ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବା ୟାର କଷ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବନି। A matrix with dimension 1 into is known as 1 କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଏଟା ତାର n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନଥିବ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି रो मैट्रिक्स ओ सॉरी उल्टा कहते 1 into n तो एमती एमती ହେଲା ଏଟା ହେବ रो मैट्रिक्स। A set is x a is equal to x belongs to r where x square is equal to 9 और 2x is equal to 6 तो x रो वैल्यू केते हबो x square is equal to 9 हेले x is equal to 3 एठी 2x is equal to 6 तो x is equal to 6 by 2 is equal to 3 এই সেটরে তো কেবল গোটে ହିଁ ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে 3 তাহলে কোন কোনতে সিঙ্গেলটন সেট if a is equal to 0 then a is is equal to 0 होची ताले a रो कोन हितो एटा सिंगुलर मैट्रिक्स हेतिबो तो तार वैल्यू सब बळे 0 आछी for the following matrix a and b if a and b are 0 then the necessary implies that a और b रो मल्टीप्लिकेशन 0 होची ता माने कोन ना एरो वैल्यूटा 0 केमती हो a0 b0 हेले तो हबनी तार किछ ना किछ वैल्यू रहइबो तो यार आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। The slope of the function y is equal to x square minus x is equal to 0 at which of the following x value is equal to केते x रो वैल्यू पचार छै तो यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं जाओ 2x स्क्वायर एठी देखो
टू एटा जदि dy बाय dx निगला ताले 2x हो देखो dy बाय dx नहीं गले एटा करे 2x minus 1 x is equal to 1 x is equal to 1 by 2 माने 0.5 आउ कोन ये क्वेश्चन देखो if the average revenue function AR is equal to 3q plus 5 where q is the level of output and the marginal revenue function is dash तो ये तुम AR देछि AR रे जदि हमें q ऐड कर दबा ताले टोटल रेवेन्यू हे जो q ऐड करले केते हबो एटी देखो 3q plus q is equal to 5 plus q तो एटा कहबो 3q square plus 5q एटा हला तुम टोटल रेवेन्यू आ मार्जिनल रेवेन्यू कोन बाहरिबो ना टोटल रेवेन्यू डेरिवेटिव एटा करले केते हबो 6q plus 5q एटा बतारो correct answer examine the curvature of the function y is equal to 3x square minus 14x plus 5 at the point x इतरे कौन करिवो ना प्रथम यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करिवो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का बाहर करले केते बाहर 6x square minus 14 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करले 12x बाहर छी ହେଲା तो से x रो वैल्यू दे दी 3 जदि x रो वैल्यू इक्वल टू 3 दे दी ताला मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहउची सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जदि पॉजिटिव रहउची ता माने एटा कोन हबो मिनिमम हबो वैल्यूटा तारो मिनिमम वैल्यू रहबो माने कन्वेक्स टू द ओरिजिन at point x is equal to a the first order derivative function y is equal to g fx is equal to 0 then second order derivative is positive it implies that dash देखो यदि x is equal to a first order derivative is equal to 0 और second order derivative यदि positive अछि ताले यार वैल्यूटा मिनिमम हबो आ यदि second order derivative टा नेगेटिव अछि first order derivative 0 अछि ताले एटा मैक्सिमम वैल्यू हबो ना तो एठी हबो मिनिमम वैल्यू Which of the following measures of central tendency is not based on the all item of the distribution? कोटा all item mean median mode ए भितरु कोटा all assumption निया होनी mode निया होनी कहने जोटा maximum time frequently यूज होची सेटा को निया जाय mode तो इतरे सब आइटम रा आवश्यकता न थाए If the total sum of square is equal to 192, the standard deviation is 4, then the total number of observation केते एटा देखो standard deviation formula कौन था this is equal to summation of x bar minus x bar whole square root over divided by n minus 1 এটা তার ফর্মুলা লিখি দিও ফর্মুলাটা এই অনুসারে যদি ভ্যালু পুট করিবা जोटा कि एठी पुट करा हैची एठी देखि दियो एठी n minus 1 टा छाड़ दे तो इज इक्वल टू 4 हैला तेरा 192 by n minus 1 is equal to 4 तो जदि एटा को हमें स्क्वायर दी पर साइड करता ताले 192 by n minus 1 is equal to 16 तो यार वैल्यू होची n is equal to 192 by 16 is equal to 12 एटी minus 1 थिला एटी हेले plus 1 तो 13 यार आंसर होची बट जेते नाही ने तो आंसर नै जबा बी एटा टिके कंफ्यूज अछि ए मेथड रे देखि दियो बट यार आंसर 13 बाहरिबो फिर 12 पॉइंट समथिंग बाहरिबो increasing in the number of patients in the hospital due to heart stroke is a dash heart stroke टा रेगुलर तो आसे नहीं सीजनल आसे बा हठात केते बेला आसे तो एटा होची सीजनल फ्लक्चुएशन बा वेरिएशन
ticket number 1 to 30 maximize the ticket in a random. What is the probability of a ticket run has number which is multiply by 3? तो 3 द्वारा multiply केते गुड़ा ही परिबो 30 भितरे 10टा ही परिबो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 30 10टा ही परिबो तो फेवरेबल केस होउछ केते 10 टोटल केस होउछ 31/3 आंसर होउछ 1/3 in a two variable linear regression analysis. If the two regression lines are constant, then it implies that a two variable are perfectly linear to each other. The difference between open and a closed input output system is terms of a dash. देखो कौन होची which is represent the external demand or supply in the in contrast a closed input output system does not have an exogenous variable which demand is generated okay internally within the system तो এটা হচ্ছে existence of a exogenous sector. Given the demand function is equal to P is equal to 2Q minus 4, calculate the consumer surplus. देखो এটা consumer surplus केमती बाहर करबा ପାଇଁ ଦେଇଛି ମୋତେ ବି ଠିକ ଜଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଟା ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ P ଦେଇଛି ତାହେଲେ P is equal to 2Q minus 4 ओके तो यार वैल्यू यदि 5 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2Q is equal to 9/5 plus 4 9 A is equal to 2 तो यार 4.5 होଉଛି आंसर बट एटा होछि कोन Q पाई गले बट कंज्यूमर सरप्लस कोन कहिछि द बिलो above the price line and below the demand कर्व तो एटा 5 रो अधिका हबो आउ डिमांड लाइन रो मैक्सिमम टू कम रे रो तो यार आंसर में भी 10 हबो बट एटा क्वेश्चन केमती कोन सॉल्व कंज्यूमर सरप्लस बाहर करिवो तारो एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन एटा केमती बाहर करिवो ठीक से मु जानि नहीं बट मे बी यार आंसर 10 हबो काइना प्राइस टा 5 अछि तो 5 टू तो अधिका हबो एरिया टा आउ क्यू डिमांड कर्व टू तळे हबो तो मैक्सिमम टू कम हबो तो 5 तो हबोनी 0 तो हबोनी 25 आउ 10 भितर मते लागुछि 10 टा हबो which measure of central tendency is most suitable for the calculation of an index number calculation करे ପାଇଁ ସବୁଠୁ easy method कोटा बा suitable method होची geometric mean. Which one of the following is a random sampling design? Random sampling design होची simple random sampling. हला यार आंसर होची C.